First, we will discuss perfect competition. Well, it is one of the market, and we will discuss characteristics of perfectly competitive market. गोटे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रो कौन कैरेक्टरिस्टिक्स हे पारे आमे प्रथमे जानिबा दरकार काहेकि ना कौन हेले आम एई मार्केट टी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहिबा ताले फास्ट होची that is a large number of buyers and sellers. That means the whole market is fragmented among various firms and buyers. There are large number of buyers and sellers present in this market. And next, that all the firms present in the market, they will produce homogeneous product. Homogeneous means एका परी सब कमोडिटी हेथिबा दरकार. That means identical. तार नेचर समस्तंकर समान हेथिबा दरकार. नेक्स्ट होची परफेक्ट नॉलेज. That means सेमाने मार्केट विषय संपूर्ण भावे अवगत थिबा दरकार. That means that any technological improvement ki manufacturing processes will be there, then that firms will aware about the knowledge of the market. Next, that is resources. That means that all the firms present in the market, they should have same technology and input. समस्त पाखरे एका प्रकार इनपुट कौन पिले इनपुट होची that is raw materials, capital and machineries and labor एई फैक्टर गुडी को समस्ते अवेल करि परिबे. तापर नेक्स्ट होची strong no barrier. There is no barrier for the entry of the new farms. That means nobody will restrict the entry of new farms. नुआ उद्योगी माने नुआ फार्म माने से माने मार्केट भीतर को एंटर करि परिबे. तले ए जो पांचोटी फैक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कशन कले इट स्ट्रिक्टली फॉर दैट इज योर प्योर कंपटीशन. तले नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. प्योर कंपटीशन एंड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट भीतर डिफरेंस कोन हमें देखिया ना. इफ वी ऐड सम टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स टू दीज 5 characters, then we can say it is perfectly competitive market. That is perfect mobility of factors of production. That means factors of production गुड़िक गोटे जगह को आउ गोटे जगह को स्थानांतरित हो पारथिबो. नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. एई उपादान गुड़ी को ट्रांसपोर्ट करिया पई कि गोटे जगह रु अन्य जगह को नवा पई हमकु कोनोसी देय देबा को पड़िबो नाही. ताले जेते बेले एई दुईटी कैरेक्टरिस्टिक के आमे उपरोक्त पांचटी कैरेक्टरिस्टिक सहित add कर दवा, then we can say it is perfectly competitive market. But from economic point of view, that many economists are of the opinion that there is no such difference between that is perfectly and pure competitive market. That is perfect competition and pure competition are synonymous to them. And next we go, that is the firm as a price taker in the perfectly competitive market. तले आर अर्थ कौन, why it is price taker ना. perfect competitive market रे जेते बेले both firms and buyers are aware about the market situation, that means about the price. तले single price ruled in the market. ताले गोटे निर्दिष्ट मूल्य गोटे द्रव्यर मूल्य रहिबो एवं आमे से प्राइस टी केमिति डिटरमाइन करिवा ना. इन द मार्केट दैट द प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. जेतले डिमांड एंड सप्लाई जो प्राइस रे इक्वल हेबे जोटी इंटरसेक्ट करिवे ताले दैट इज कोन ना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड एंड प्राइस. Then here you just look to the figure. A figure को देखो. This is your demand curve. This is your supply curve. Supply and demand curve intersect each other at this point. ताले एई जगह रे supply curve एवं demand curve छेद करूछंती एवं determine करूछनी कोन ना quantity किए ना this Q star is the quantity demanded and supplied and P star is the price. ताले this price will be determined by the interaction between the demand and supply.
ताले डिमांड और सप्लाई रो इंटरैक्शन द्वारा जो मूल्यटी निर्धारण हबो सेही प्राइस की सब फार्म माने एक्सेप्ट करिवे एवं बायर माने एक्सेप्ट करिवे सेलर माने भी एक्सेप्ट करिवे ताले एई पी स्टार रे ताले डिमांड कर्व रो नेचर केमिति हबो ना इट विल बी हॉरिजॉन्टल टू दैट इज एक्स एक्सिस दिस क्वांटिटी एक्सिस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे हम कोन मेजर करछे ना क्वांटिटी डिमांडेड मेजर करछे ताले डिमांड इज इक्वल टू ताले जेहेतु इट इज पैरेलल टू दिस ताले एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हम केमि देखिबा एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रहबो आ परे आलोचना करिबा ताले द नेचर ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट दैट इज इक्वल टू कोन ना हॉरिजॉन्टल ताले इन ए परफेक्टली इट इज परफेक्टली इलास्टिक ताले नेचर कोन इट विल बी परफेक्टली इलास्टिक ताले ए कर्व जेहेतु पैरेलल एक्स एक्सिस सहित एटा परफेक्टली इलास्टिक बोली हमें कहबा एवं ए ये हमें कोन कहबा ए कर्व जेहेतु एवरेज रेवेन्यू सहित समान मार्जिनल रेवेन्यू सहित समान एंड हमें जानिचे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस सहित एवरेज रेवेन्यू समान तेनु प्राइस इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ताले मार्जिनल रेवेन्यू सहित भी समान हबो ताले एटी देखिबा total revenue I mean how we can calculate the marginal revenue in the market and how marginal revenue here is equal to price average revenue price सहित समान ताले total revenue आमे केमिति calculate करिवा ना जेते बेला आमे गोटे निर्दिष्ट द्रव्यर मूल्य संगे एवं केते क्वांटिटी डिमांड होची ताको मल्टीप्लाई करिवा ताले we will get total revenue ताले total revenue is equal to P into Q ताले एवरेज रेवेन्यू कोन एवरेज रेवेन्यू होची दैट इज पर यूनिट रेवेन्यू ताले दैट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू जगह हमें एई जगह रे हमें बर्तमान सब्स्टिट्यूट कर दवा पी और क्यू एंड डिवाइडेड बाय क्यू रहिला क्यू क्यू विल बी कैंसिल्ड देन वी विल गेट पी ताले एटा होची हमर प्राइस ताले व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू ताले मार्जिनल रेवेन्यू होची दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू टू दैट ऑफ चेंज इन आउटपुट ताले आउटपुट रा गोटे यूनिट चेंज हेले जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू सहित ऐड करा जाए ऐड हो जाए ताको हम कहबा कोन मार्जिनल रेवेन्यू ताले मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टीआर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू ताले इज इक्वल टू डेल्टा हमें टीआर जगह एठी पी क्यू पके देबा डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू ताले ए जो पी हमें एठी ब्रैकेट टी के ओपन कर देले कोन होबो जदी खोली देबा ना p into delta q divided by delta q will be cancelled आमी ताको काटी देले आमी कोन पाइबा ना दैट इज प्राइस ताले प्राइस इज गिवन फॉर ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट फार्म ताले बर्तमान देखिबा कोन ना प्राइस जदी गिवन हैला ताले प्राइस ता का सहित समान हबो ना मार्जिनल रेवेन्यू सहित समान हबो देयर बाय एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ताले बर्तमान देखिबा सप्लाई कर्व फॉर द फार्म सप्लाई कर्व फार्म में का को कहबा केमिति बाहर करिया ताले सप्लाई कर्व फार्म को बाहर करिया पूर्व आमे जानिबा दरकार प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द प्राइस टेकर फार्म ताले प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कोन ना प्राइस टेकर फार्म की ना परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रे जेते गुडिए फार्म उपस्थित रहिले ताले से माने समझते होचनी प्राइस टेकर फार्म काहे की ना दे कैन बी कंसीडर्ड एज प्राइस टेकर से माने जो प्राइस टी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रे डिटरमाइन करा हेतिबो सेही प्राइस की एक्सेप्ट करिवे they cannot change the price or they cannot influence the price से माने प्राइस की परिवर्तन करि परिबेनी से माने प्राइस रा मूल्य चाल करि परिबे नाही फार्म माने भी प्राइस रा मूल्य चाल करि परिबे नाही तेनो प्राइस विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ताले प्रॉफिट हमें केमिति पाउचे व्हाट इज प्रॉफिट केमिति पाइबा ना प्रॉफिट इज इक्वल टू कोन ना टोटल रेवेन्यू जेति के हमें पाइथिबा ता देहरु जदी टोटल कॉस्ट जेति के हमें खर्च करथबा जदी हमें ताकू फेडी देले ताले जो रेसिडुअल रहिला जो बळका रहिला दैट इज नोन एज योर प्रॉफिट एडी देखो पाई इज इक्वल टू टीआरक्यू कोन क्यू इज द अमाउंट ऑफ गुड ताले एति की गुड सेल कले से रेवेन्यू केते पाइला टीआर एति की जिंस तयारी करिया पई से खर्च कला केते टीसी ताले टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट गिव्स अस प्रॉफिट
एटी गोटे एग्जांपल देइछि to illustrate the farm's problem. Suppose that a rose grower anticipates that the market price for fresh cut roses will be p is equal to 1 per rose. ताले गोटे गोलाप फूलर दाम केते हला टंकाटे हला ताले एई टेबल टी रे हमें वर्तमान देखिबा कोन देखिबा ना केमिति हमें कैलकुलेट करूचे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट प्रॉफिट एटी जेते बेले क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और क्वांटिटी डिमांडेड इज 0 ताले एटी टोटल रेवेन्यू केते 0 टोटल कॉस्ट केते 0 टोटल प्रॉफिट केते 0 ताले व्हेन क्वांटिटी विल राइज टू 60 ताले गोटे यूनिट की जदी गोटे टंका हला 60 यूनिट केते हबो ना टोटल 60 रुपीस तापर कोन ना एई 60 यूनिट रो गोलाप तयारी करिया पई ताकू ग्रो करिया पई केते टंका खर्च कला से 95 खर्च कला ताले पाइला केते 60 टंका ताले लॉस कला ना प्रॉफिट कला ना 60 माइनस 95 इज इक्वल टू माइनस 35 दिस इज पिले माइनस 35 तेनु प्रॉफिट इज नेगेटिव ताले एठी से लॉस करछि नेगेटिव प्रॉफिट माने कोन लॉस कला ताले बर्तमान 60 जगह से 120 यूनिट तैयारी कला और 120 टी गोलाप फूल बिक्री कला ताले तार रेवेन्यू केते पाइला ना 120 टंका खर्च अछि 120 पे केते 140 टंका स्टिल देन एहा परे भी सी एठी 20 टंका लॉस कला एवं 180 आउ 60 टा से बिक्री कला अधिका ताले 180 यूनिट से बिक्री कला पे परे केते पाइला 180 टंका तापे खर्च कला केते ना 155 ताले 180 माइनस 155 इज इक्वल टू केते हला ना दैट इज 25 240 जेतेबेले तार यूनिट सोल्ड से जेतेबेले 240 टी बिक्री कला से प्राइला केते तार टोटल रेवेन्यू केते हला ना 240 एवं टोटल कॉस्ट केते हला ना 170 ताले 240 माइनस 170 दैट इज इक्वल टू 70 ताले जेतेबेले 300 से कला ताले तार रेवेन्यू केते पाइला 300 पाइला खर्च करछि केते 210 ताले पाइला केते ना प्रॉफिट तार केते हला 90 ताले वर्तमान एटी से 90 रुपीस प्रॉफिट कला जेतेबेले 360 से बिक्री करूछि पाउछि केते 360 किंतु खर्च केते कला 300 पाइला केते ना प्रॉफिट कला 60 ताले एठी कोन हला प्रॉफिट तार कमीबा को लागिला हैला ताले एठो हमें जानले कोन ना बियॉन्ड 300 यूनिट सोल्ड ताले सी जति 300 यूनिट परे आ अधिका यूनिट सेल करिवो ताले तार केते लॉस हबो ना 60 टंका 30 टंका से लॉस करिवो एठी 60 टंका मात्र प्रॉफिट पाइतिला आगुरु केते पाउतिला 90 टंका पाउतिला 100 300 यूनिट रे जेतेबेले 360 यूनिट कला सेतेबेले तार प्रॉफिट कमी गला केते 60 को फिर आउ 60 इंक्रीज कला ताले से तू से केते ना 420 यूनिट्स गुलाब से बिक्री कला एवं टोटल रेवेन्यू केते पाइला ना 420 पाइला टोटल कॉस्ट केते कला ना 460 कला ताले 460 by 20 minus 460 ताले एठी लॉस केते हला 40 दिस इज योर पिले माइनस नेगेटिव हे गला हला एठी माइनस साइन ये हिची 420 minus 460 minus 40 ताले दीज आर द लॉस ताले एठु हमें कोन जानले ताले से मैक्सिमम प्रॉफिट कोडी पाइला ना 300 यूनिट रोज बिक्री कला परे से मैक्सिमम प्रॉफिट पाइला 90 रुपीस रो प्रॉफिट पाइला हैला ताले प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट केते हला ना दैट इज इक्वल टू 300 एटी देखो आमे बर्तन देखिबा कोन ताले जदि आमे वी विल इंक्रीज सेलिंग रोजेस बियॉन्ड 300 यूनिट ताले ही इज गोइंग टू लॉस सम प्रॉफिट ताले प्रॉफिट विल रिड्यूस ए पॉइंट गुडा का पिले फिगर को हमें नहीं देखिबा देखो ए ग्राफ को आसो ए ग्राफ रे ओ एक्स एक्सिस एटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे हमें मेजर करछे क्वांटिटी ऑफ रोजेस सोल्ड हमें केते गोलाप क्वांटिटी सेल करछे वाई एक्सिस रे हमें कोन करछे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेजर करछे ताल देखो ए जो स्ट्रेट लाइन कर्व जाईची दिस इज योर टीआर कर्व टोटल रेवेन्यू कर्व एटी कोन ना दिस इज योर टोटल कॉस्ट कर्व ए जो कर्व टी टोटल कॉस्ट कर्व ताले वर्तमान एटी देखो ए पॉइंट पर्यंत जदि एटी हमें आनिबा ए पॉइंट रे कोन होची टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट
ताले प्रॉफिट केते हबो ना जीरो जदी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हैला प्रॉफिट केते हे जीवो जीरो ताले अप टू बिलो दिस पॉइंट बियॉन्ड माने अप टू 60 यूनिट जो गला ताले एडी से कोन कला ना टोटल कॉस्ट कर्व इज लाइंग अबव द टोटल रेवेन्यू कर्व ऊपर टोटल कॉस्ट कर्व रहउची ताले से कोन करची व्हाट इट इम्प्लाइज ये कौन हमको इंगित करूची ना टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टोटल रेवेन्यू ताले टोटल रेवेन्यू टा टोटल कॉस्ट अधिक ताले ए जो पोर्शन ने जेति की से लॉस करूची से लॉस रो अमाउंट केते ना दिस इज ताले ए जो प्रॉफिट कर्व टी अछि ए पोर्शन ए जो ओवल पोर्शन एटी अछि हाफ ओवल पोर्शन ताले एटा होची तार लॉस ताले एटी से प्रॉफिट करूनी और नेगेटिव प्रॉफिट करूची एई पॉइंट को जेतेबेले आसी एई जगह रे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ताले दैट मींस प्रॉफिट इज इक्वल टू केते जीरो एवं बियॉन्ड दिस लेवल व्हेन ही इज सेलिंग then the profit is going to rise therefore that the profit curve is rising gradually এবং it will continue to rise up to selling of roses to 300 units তাহলে 300 यूनिट्स रोज सेल कला पर्यंत वर्तमान तार प्रॉफिट कर्व राइज करी करी गला एवं 300 रे जेतेबेले पहुंचिला सेतेबेले दी प्रॉफिट इज मैक्सिमम ताले प्रॉफिट इज मैक्सिमम हे गला एवं जदि बियॉन्ड 300 लेवल से सेल कला ताले प्रॉफिट कर्व विल कोन डिक्रीज ताले एटी प्रॉफिट कर्व डिक्रीज करी करी गला एवं एई पॉइंट रे देखो एई जो चिन्ह एटी एक्स एक्सिस की प्रॉफिट कर्व की इंटरसेक्ट कला ताले दैट मींस एटी अगेन कोन होउची ना दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो गला ताले एटा गला हमें कोन कले टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कांसेप्ट को नै कले हमें बर्तन जिबा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट ताले you know that in a perfect competitive market marginal revenue or demand curve is horizontal or perfectly elastic thereby it is parallel to x axis and you know MC curve this is your MC curve U shape MC curve tale MC curve intersect the MR curve at these 2 points tale gote 60 unit of selling of rose and gote kete 300 units of selling of rose in thousands 300,000 anyway एई जगह रे ताले एई जगह रे कोन होची ना MC इज कटिंग MR ताले देखो एई लेवल टी की देखो 0 to 60 एई पोर्शन ने जदी से सेल करची ताले मार्जिनल कॉस्ट इज लाइंग अबव द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ताले देयर बाय कोन ही विल इनकर लॉस जोटा बे हमें कहले एठी लॉस से कला तापरे कोन हला ग्रेजुअली मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स ताले मार्जिनल कॉस्ट fall below the marginal revenue ताले thereby profit started rising ताले वर्तमान एटी कोन हे गला ना डीसी एउट जदी प्रॉफिट हैला ताले ए जगह रे भी प्रॉफिट अप टू ए जगह से प्रॉफिट करी करी जीवो ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट जगह एटी दीटा जगह रे एमसी इज कर्व इज इंटरसेक्टिंग एमआर कर्व ताले वर्तमान ए पॉइंट रे एमसी कर्व इज इंटरसेक्टिंग एमआर कर्व फ्रॉम द above of the MR curve and at this point MC curve is cutting MR curve from its below tale joti above tale beyond before this level before this point he was incurring losses after this point he is incurring profit tale thereby ame to the condition ame gote paile eti kono na profit maximizing condition tale this is total amount of profit tale that is kono MR is equal minus MC is equal to marginal profit ताले marginal profit कोन ना sum total of the marginal profit is the total profit ताले total profit is the this portion is your total profit ताले total profit is maximum को जगह रे ना 300 ताले beyond this level again MC curve is कोन rising and intersecting the MR curve from its below एवं ता तळु एया को छेद करूची एवं जेतेबेले MC curve is lying above the MR curve again cost is going to be more than that of the revenue then thereby this is the profit maximizing condition that is kono na MC is equal to MR and second condition kono na MC curve must cut MR curve from its below then marginal cost curve समान हेतिबा दरकार marginal cost समान हेतिबा दरकार marginal revenue सहित एवं marginal revenue रो निम्न भाग ताकू छेद करथिबा दरकार तले एठी देखो
this shows that there are two profit maximizing condition for a price taking firm. Gote la P is equal to MC, MC must be increasing. Tala at the point of intersection, MC is rising. Bujhila? Tale, ame it supply, how a farm will supply? Now the rising part of MC curve reflects the farm's supply curve. And the horizontal summation of the entire farm supply curve will be market supply curve, which is upward sloping. आपरे हमें supply curve clearly ये करिगा एटी खाली एति की जानिथिबा दरकार. देखो ए फिगर को हमें आसीबा हमें जानिचे this is demand, this is supply. ताले demand curve कोठी हमें देखिबा प्राइस कोठी एकला ना P2 तापरे P0 धर demand D0 and this is your supply curve, they are intersecting here and price is going to be determined as P0, which price is taken by the farm. The farm will take this price as P0 and MC curve will intersect at this point. The MC is equal to MR, thereby this is your equilibrium point. It is your equilibrium quantity. Now if the demand curve shifts from D0 to D1, what will happen? ताले कौन है लाइटी again new equilibrium point आसीबो new price हमें पाइबा that is which will be more than P0. ताले P1 is the new price. This new price will intersect the MC curve at this point. Again MC is equal to M. ताले एटा गोटे equilibrium point हैला and the equilibrium demand is equal to Q. ताले एटा farms ର demand. जदि price will fall to P2 ताले एठी कोन हबो ना डिमांड कर्व will shift from D0 to D2 and it will intersect here and what is the equilibrium quantity? Na Q2 is the equilibrium quantity. ताले equilibrium quantity केते हबो Q2, price केते हबो P2. ताले एई price जेतेले फार्म नबो it will intersect or it will be equilibrium, farm will attain equilibrium को point रे एई point रे and will produce Q2 level of output. ताले from this point onwards he will go to sell the quantity or demand the quantity. Demand is farm will demand. Tale at different price this is will be demand over the MC curve. Tale this portion is the upper portion. A point ru A ad ko upur ku jeti ki jiba that is known as your supply curve of the farm. Now we will discuss that the cost structure of the price taking farm. हमर जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रे जो फार्म गुडी कर रहले ताले तार कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें जानिबा. ताले इन जनरल गोटे मार्केट रे वी आर डिस्कसिंग शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन. ताले दैट पीरियड इज हैविंग वेरी इंपोर्टेंट और पीरियड इज वेरी वाइटल फैक्टर. आमे पीरियड ऊपर गुरुत्व दोचे. ताले आमे जनरली आमे डिस्कशन करूचे कि आलोचना परिसर वृत्त करूचे काहाकू ना शॉर्ट रन स्वल्प काल एवं लॉन्ग रन वर्धित काल आमे ताकू आलोचना करूचे. ताले एठी देखिबा शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कोन ना शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट. आमे एई जो जिंसा आ परे अछि आलोचना करिबा फिक्स्ड कॉस्ट का कोंदी वेरिएबल कॉस्ट का कोंदी. एटा ला शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट, एटा ला नॉन संक फिक्स्ड कॉस्ट NSFC एंड TBC ला टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ताले हमर देखिबा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें का कहबा वेरिएबल कॉस्ट. तर सपोज दैट द कॉस्ट इनकर्ड ओवर द वेरिएबल फैक्टर. ताले वेरिएबल फैक्टर गुडी का जेतिक रहिला के रहिला लेबर रहिला रॉ मटेरियल रहिला सैलरीज टू द एम्प्लॉइज रहिला. ताले दीज आर योर कोन वेरिएबल फैक्टर. ताले एई जो वेरिएबल फैक्टर को हमें खर्च करिया ता ऊपर दैट इज नोन एज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्या कहबा ना शॉर्ट पीरियड रे लाइक जेमिति मशीनरीज हैला प्लांट हैला एंड तमर रेंटल पेमेंट हैला एई जिंस गुडा का जो सैलरी फिक्स्ड सैलरी जो हैला ताकू जेति की जो खर्च करा जाउची दैट इज इंक्लूडेड इन फिक्स्ड कॉस्ट. ताले फिक्स्ड कॉस्ट is independent of the level of output. Even if fixed cost will be incurred at zero level of output, output जदि जीरो भी हो जाए ताले हमको फिक्स्ड कॉस्ट बियर करिया को पड़िबो. ताले ताको हमें कहूचे फिक्स्ड कॉस्ट. ताले नॉन संक फिक्स्ड कॉस्ट का कहबा नॉन संक फिक्स्ड कॉस्ट हैला कोन ना एटा को
आमे बियर करिया और इट विल बी इनकर्ड इफ द फार्म इज टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट ताले जेतेबेले सी आउटपुट प्रोड्यूस करे सेतेबेले वेरिएबल कॉस्ट सह नॉन संक फिक्स्ड कॉस्ट भी थाए ताकू बियर करिया को पड़ी थाए ताले टोटल कॉस्ट जेतेबेले आमे कैलकुलेट करछे आमे कोन नउछे द सम टोटल ऑफ द टोटल शॉर्ट टर्म टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड नॉन संक फिक्स्ड कॉस्ट that is the farm total fixed cost TFC is thus given by TFC is equal to NSFC plus SFC ताले जदि NSFC is equal to 0 होबो जदि NSFC non sunk fixed cost जदि 0 हैला ताले कोन हे जिवो TFC is equal to केते हे जिवो ना SFC total fixed cost is the sum total of non-sunk fixed cost and short-run fixed cost. ताले जेतेबेले non-sunk fixed cost is equal to 0 होबो ताले total fixed cost का सहित समान हे जिवो short-run fixed cost सहित समान हे जिवो ताले did you check your progress अच्छा एट देखिबा हमें the perfectly competitive market रे farm in the short run and long run ताले short run price and output how we are determining short run price and output that is equilibrium level of output in short period generally three profits are observed one is your normal profit and abnormal profit the loss is means your negative profit ताले you just observe this figure in this figure normal profit means कौन that is no loss no gain ताले आमे कंडीशन कौन जानले ना MC कर्व this is your perfect competitive market रो MR कर्व AR कर्व and demand कर्व ए straight line दा ताले एटा your MC कर्व is intersecting here this is your AC कर्व why we are introducing AC curve here आमे काहे की AC curve एठी इंट्रोड्यूस कले ना टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट काहे की ना पर यूनिट प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट at this point you just observe that MC curve is intersecting both MR curve and AC curve ताले at this point MC is equal to MR is equal to AR ताले that is AC is equal to AC also ताले since AC is equal to AR at this point then there will be no profit ताले which is called your normal profit and what is your amount of output produced ताले maximum output produced will be this Q come to this is an abnormal profit means that is your supernormal profit कौन ना that is the positive profit ताले suppose this is your price line or average revenue and marginal revenue curve this is your FC curve AC curve you know AC curve is U shaped and this is the minimum point of AC curve and आमे जे कहबा MC curve सबु बेले कोन करि थाए ना AC curve द minimum point को छेद करि थाए ताले एई पॉइंट रे छेद करि के ऊपर गला एवं मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कोठी इंटरसेक्ट कला एई पॉइंट रे जोटी ए हाथ चिन्हटी अछि ताले इक्विलिब्रियम कोठी हला एई पॉइंट रे इक्विलिब्रियम हला ताले इक्विलिब्रियम जदी एई पॉइंट रे हला ताले इक्विलिब्रियम आउटपुट केते हला ना Q is the equilibrium output and P कोन ना that is the equilibrium price and you just observe ताले एई एतिकी लेवल ऑफ आउटपुट रे तमरा एवरेज रेवेन्यू केते हला ना दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू एई लाइन टी जो परपेंडिकुलर लाइन टच करछि एवरेज रेवेन्यू कर्व को व्हाट इज एवरेज कॉस्ट एई पॉइंट पर्यंत आसिला एउठु एई जाय गला ताले दिस इज योर कोन एवरेज कॉस्ट ताले एवरेज प्रॉफिट केते हला दैट इज आवर पर यूनिट प्रॉफिट केते हला ना एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट एई जो आर चिन्ह देछि एतिकी पॉइंट ताले टोटल प्रॉफिट केते हला जदी एतिकी हला तमर टोटल आउटपुट ताले टोटल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ दिस इज इक्वल टू दैट इज टोटल प्रॉफिट ताले एई जो रेक्टेंगल एरिया रहिला इट इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट और नोन एज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ताले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कोठी अराइज करे ना को जगह अराइज करे ना जेते बेले minimum point of the average cost curve will lie below the marginal revenue curve or average revenue curve पळे असा ए फिगर को आसी वर्तमान that is your loss
लॉस रे हमें कौन देखुचे ना the minimum point of average cost curve is lying above the average revenue curve or demand curve or that is your marginal revenue curve ताले एटी per unit loss एटी कौन है जाउची ना average cost is greater than average revenue. This is your average revenue, this is your average cost. ताले average revenue is less than that of the average cost by this amount. ताले this is your per unit loss. ताले total loss to a जाके this is your OQ or that is your AQ amount multiplied with this is your average revenue, that is a average cost, that is known as your total loss. This is per unit loss. Per unit loss, this is your per unit loss multiplied with that is total output, this is the total loss. ताले आमे एथु जानले कोन ना जेतेबेले मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कर्व रो मिनिमम पॉइंट विल लाई अबव द प्राइस लाइन ताले एठी रहिछि एठी मिनिमम पॉइंट ताले इट विल इनकर लॉस बुझिला ताले नॉर्मल प्रॉफिट का कोंदी आ एबनॉर्मल प्रॉफिट का कोंदी आमे देखिया एठी वर्तमान ताले शॉर्ट रन प्रॉफिट इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ताले यू जस्ट ऑब्जर्व हियर इन दिस फिगर ताले हियर आमे नोचे प्राइस एंड कॉस्ट मेजर करछे और रेवेन्यू एंड कॉस्ट एटी क्वांटिटी ऑफ द गुड एटी कोन हला दैट इज प्राइस टेकर धर सपोज p0 इज द प्राइस which is taken from this point that supply and demand are intersecting each other here. P0 is the price, P0 price is taken by the farm and farm is equilibrium at this point, that is your marginal revenue is equal to marginal cost and thereby जे per unit profit केते हिजबा ना एतिकी हला per unit profit एउटू ए पोर्शन टोटल प्रॉफिट हला ए रेक्टेंगल टा टोटल प्रॉफिट हो मैक्सिमम प्रॉफिट हो ताले if now the supply will rise ताले supply rise कले supply curve will shift to S1 from S0 to S1 ताले now new equilibrium point in the market here and new price is equal to your OP1 and OP1 price will be taken by the farm ताले आकु कण farm sir कण price taker ताले OP1 price रे वर्तमान कण हबो that it will be tangent to the minimum point of SC where MC is equal to MR is equal to AR. ताले this is your normal profit. बुझिला ना नहीं ताले if supply will rise then automatically the farm will earn normal profit. अच्छा this is your short run loss. ताले short run loss केते बेले हबो ना suppose this was your price हमरा एति थिला प्राइस ए जगह रे थी एठी आसिला ए अमाउंट ता होची कोन दैट इज योर लॉस एठी कोन ना जत्ते बेले प्राइस लाइन विल लाई बिलो मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर देन ऑटोमेटिकली द फार्म विल इनकर लॉस इन ए लॉस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म केस रे अच्छा बर्तन आसिला लॉन्ग रन तले इन लॉन्ग रन आमे कोन करिया केमिति आमे डिटरमाइन करिया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड you know that long period is a period where that the farms will get sufficient time or the producer will get sufficient time to change all its factors of production, that is long period. Tale it can change plant size, it can change the number of labor workers, it can change the production capacity, it can change the technology, everything else it can be changed. Now you just here you see that this is your I mean equal short run average cost curve रहला and long run average cost एटी price per unit एटा हला quantity एटा हला demand per unit एटा होची price हमें एटी determine कले this price will be taken by the farm and this is your average cost curve and long run average cost curve and MC is equal to long run is MC curve, MC is equal to MR at this point. And you just see here that SMC at this point, SMC also intersecting SAC at this point. So this is your SMC curve and this is your all will be equal at the equilibrium point. That is long run equilibrium केते बेले हबो ना जेते बेले MC is equal to MR, SMC is equal to MR is equal to LAC is equal to LMC is equal to price, then long run equilibrium will be achieved by a perfect competitive market. Now we will switch over to next chapter, that is your monopoly.
তাহলে shutting down point we see, and then we will switch over to monopoly. You just observe this figure. In this figure we have introduced that is average variable cost. What is average variable cost? Now that is per unit variable cost, and you know that is total variable cost is equal to sum total of the variable cost and fixed cost. তাহলে ফিক্সড কস্ট এবং ভ্যারিয়েবল কস্টর সমাহারକୁ और ସମୁଦାୟକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ସମୁଦାୟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାহଲେ ଏଠି ରହିଲା ଆଭରେଜ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ କର୍ଭ, ଏଠି ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ योर एमसी कर्व, एठी रहिला दैट इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व। एमी कैलकुलेशन को ये करो, खाली फिगर को देखो, यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। देखो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व, दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, दिस इज योर एमसी कर्व। एमसी कर्व will intersect both average variable cost and marginal average total cost curve at its minimum। তাহলে marginal cost curve average variable cost এবং average total cost ର minimum point ଦେଇ ଗତି କରିବ, তাহলে और intersect छेद କରିବ। তাহলে বর্তমান দেখো আমি জানিছে ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন কি MC is equal to MR, তাহলে MC is equal to MR at this point। তাহলে এই পয়েন্ট রে ইকুইলিব্রিয়াম হেলা, তাহলে what is the price? This is the price line and say that is P is equal to AR is equal to 10 here। তাহলে নাও এই জায়গায় বর্তমান দেখিবা এই পয়েন্ট কো আসা, তাহলে এটি P is equal to AR is equal to 4। তাহলে বর্তমান এই যে রেখাটি যাইছি এতিক, তাহলে এইটি যেতবেলে সে রেভিনিউ পাউছি এতিকি এবং কস্ট পাউছি এতিকি, তাহলে এটি সে নরমাল প্রফিট করুছি। কিন্তু যদি তার एवरेज रेवेन्यू कम हो जाए कोठी एठी की जेतेबेले आसीबो, ताले सेठी कोन हबो ना ही द फार्म इज अनेबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ताले जेतेबेले गोटे फार्म तार वेरिएबल कॉस्ट को पाई न परिबो, तेनु सी कोन करिवो, ही विल क्लोज डाउन द फार्म। काहेकि ना जदी कंटिन्यू करिवो ताले ही विल इनकर he will cover fixed cost and a part of the variable cost। but जेतेबेले से variable cost को cover करि परिबो नाही, ताले से कोन करिवो ना फार्म टिकी बंद करिया को चेष्टा करिवो। काहेकि ना जदी बंद कर दिए से फिक्स्ड कॉस्ट लॉस करिवो, जदी चालू करे से फिक्स्ड कॉस्ट भी लॉस करिवो। बुझिला? अच्छा, नाउ this problem you try to माने solve the problem। supply curve for a perfect competitive farm and for perfect competitive market। ताले आमे एठी जानले कोन ना that is short run supply curve is the portion of the MC curve which is above the average variable cost curve, जोटा कि मु ग्राफ रे बर्तमान तुमको देखेली। एवं long run supply curve would be the portion of the MC curve above the average total cost curve। ताले जोटा कि इंडेफिनाइट लॉस करिवो फार्म, जो कि फार्म गुडी को आउ एग्जिस्ट करि परिबे नाही। एठी जो देला एठी पर माने से 1000 रे दोची तार ए फार्म 1 फार्म 2 फार्म 3 मार्केट, ताले सम टोटल ऑफ दी एडाला ए जो एमसी कर्व एडाला सम टोटल ए जो एमसी 1 एमसी 2 एमसी 3 की मिसे देले सम टोटल करले जति पाइबा सेटा होची कोन ना दैट इज योर सप्लाई कर्व ऑफ दी मार्केट। ताले मार्केट रे जेते मार्केट रे तो गोटी फार्म नथिबे बहुत फार्म थिबो, ताले सबु जंग फार्म रो सम टोटल विल गिव अस द मार्केट सप्लाई कर्व। अच्छा, बर्तन देखिबा हमें हमर जो कॉस्ट कांसेप्ट सप्लाई कर्व केमिति पाइबा ना, सप्लाई कर्व विल आल्सो डिफर। सप्लाई कर्व हमें जानि छै गुरु दैट इज ए राइजिंग कर्व, किंतु हमें विभिन्न कंडीशन ले ताले सप्लाई कर्व पैरेलल ही पारे एवं सप्लाई कर्व इंक्रीज ही पारे, सप्लाई कर्व डिक्रीज ही पारे। ताले वी विल डिस्कस अबाउट द कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ताले इन दीज थ्री केसेस ताले व्हाट वी विल गेट, हमें कोन पाइबा ना वी विल गेट सपोज नाउ दैट गोटे इंडस्ट्री रे आउटपुट गुडी का हमें कमोडिटी गुडी का गुड गुडी का तैयारी करले दी सेम कॉस्ट रे,
ताले सब जाक सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब बेले समान रहिला ताले दैट इज कॉल्ड योर कोन कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री ताले दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व लो हो लो पॉइंट टू द को आसीबो ताले वी कॉल्ड इट आमे देखिया ग्राफ रे देखिया वी कॉल दिस ए कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री सेकेंडली आमे कोन देखिया ना जेते बेले लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप करिवो काहे की अपवर्ड स्लोप करिवो ना ड्यू टू एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हमर जेते बेले डिसइकोनॉमीज अराइज करिवो इन द मार्केट रे ताले सेठी इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री बोली आमे कहबे इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री कहबा जहार सप्लाई कर्व इज इक्वल टू कोन ना अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड केस रे भी हमें देखिबा ताले डाउनवर्ड केस रे कोन हबो ना जदी डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री रे कोन हबो ना जते बेले सप्लाई कर्व डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री रे सप्लाई कर्व कोन हबो दैट इज स्लोप डाउनवर्ड ताले दैट इज कोन इट इज बिकॉज़ ऑफ द एक्सटर्नल इकोनॉमी जदी एग्जिस्ट करिवो गोटे इंडस्ट्री रे ताले सेटा डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री हम तापरे हमें जिबा मोनोपोली अच्छा मोनोपोली आमे काहकु कहबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली मोनोपोली रो अर्थ कोन मोनोपोली गोटे वर्ड एता दीटा ग्रीक वर्ड रो डिराइव करा हिची गोटे होची मोनो एंड अनदर इज योर पोली मोनो मींस कोन सिंगल एंड पोली मींस होची कंट्रोल और सप्लायर जे कंट्रोलर और सप्लायर तले इट इज सिंगल सप्लायर और सिंगल सेलर बोली आमे कहूचे मोनोपोली तले नाउ देखिबा हमें मोनोपोली कोन ना मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन व्हिच देयर इज ए सिंगल सेलर एतिक हमें कहूचे मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर इन द मार्केट तले जेते बेले गोटे सिंगल प्रोड्यूसर एग्जिस्ट करिवो एवं ताकू हमें कहबा मोनोपोली मार्केट बोली कहबा तले व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली ना सिंगल सेलर मींस कोन ना गोटे मार्केट रे गोटिए सेलर किबा गोटिए फार्म की गोटिए प्रोड्यूसर थिबो एंड सेही मार्केट रे क्लोज सब्स्टिट्यूट किछि न थाए कि गोटे सेलर रहिला एवं से गोटे जिंस सप्लाई कला ताले गोटे फार्म रहिला से गोटे जिंस प्रोड्यूस कला ताले तारा सब्स्टिट्यूट केमि आसीबो तारा सब्स्टिट्यूट किछि नै ताले नो क्लोज सब्स्टिट्यूट विल इज अवेलेबल इन द मार्केट कंट्रोल ओवर प्राइस ताले परफेक्ट कंपटीशन रे कोन होतला देयर वाज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द फार्म देयर इज नो कंट्रोल of the farm over price तले एठी कोन हला किंतु मोनोपोली मार्केट रे कोन हला मोनोपोलिस्ट कैन कंट्रोल द प्राइस तले जे मोनोपोली फार्म से प्राइस टी कंट्रोल करि परिबो तले दैट मींस ही कैन फिक्स इट्स प्राइस और ही कैन फिक्स द प्राइस ऑफ द गुड स्ट्रांग बैरियर फॉर द एंट्री ऑफ न्यू फार्म्स तले न्यू फार्म गुडी का मार्केट को एंटर करि परिबे नाही काहे की प्रवेश करि परिबे नाही ना बिकॉज़ जदी से माने प्रवेश करले तले व्हाट विल हैपन now automatically it will lose its monopoly power tell monopoly concept will vanish no difference between a farm and industry that means if it is a single farm tell single in the monopoly market a farm constitute industry बुझिला तले why monopoly arises हमें वर्तमान देखिबा monopoly arises केमिति हमें करूची हमें जानिबा परे गोटे होची नेचुरली तले मोनोपोली सम नेचुरल कॉजेस थाए जोटा कि जिमते हमें कहूचे सर्टेन रीजन रे गोटे पर्टिकुलरली धर से गोटे एग्जांपल देछि बहिरे तमर साउथ अफ्रीका हाज मोनोपोली ऑफ डायमंड्स तले आउ को कंट्री रे डायमंड्स होनी साउथ अफ्रीका रे डायमंड होची तले जेमति निकेल इन द वर्ल्ड इज मोस्टली अवेलेबल इन कनाडा एंड ऑयल इन द मिडिल ईस्ट तले मोनोपोली इज कॉल्ड बाय नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस तले नेचुरली जते बेले गोटे जगह रे रिसोर्सेस हो कि जे कोनसी गुड्स हो हेला आमी ता कहया कोन मोनोपोली तले टेक्निकली तले सम ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल रीजन तले टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो स्पेशल नो हाउ हो साइंटिफिक रीजन्स हो साइंटिफिक फार्मूलाज हो जदी केई ऑब्जर्व कला सिंगल प्रोडक्ट लाइक योर कोको कोला तार जो फार्मूला सी काकू आउ देलानी आउ केई जानि ना कि आउ जानिबा को पाइले ताले ऑटोमेटिकली टेक्निकली ही बिकेम साउंड तेनु टेक्निकली कोका कोला बिकेम द मोनोपोली प्रोडक्ट ताले लीगली कोन ना धर मने पका धर गोटे ऑथर जने गोटे बही लिखिछि
ताले सी कौन तार गोटे कॉपीराइट अच्छी ताले इट इज लीगली एक्सेप्टेड ताले से कॉपीराइट की आउ केही यूज करि परिबे नाही केही ताकू लिखि परिबे नाही एटा कोंदी कोन कॉपीराइट जेमती बासमती राइस पैटेंट ताले बासमती राइस इंडिया इज हैविंग पैटेंट ओवर बासमती राइस ताले बासमती राइस आउ केही प्रोड्यूस करि परिबेनी ताले सेटा कोन हला ताले एटा को हम कहबे ड्यू टू लीगल aspects that monopoly power is achieved large amount of capital तल देखा गोटे जगह रे जल्दी गोटे इज ह्यू कैपिटल थिबो तले सी कोन कंट्रोल आनिबो बहु जिंस ऊपर तले जेमती आ लुम्पिनेस ऑफ कैपिटल तले सेमती कम हेले लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल और लुम्पिनेस ऑफ कैपिटल तले ऑल द फर्म्स कैन नॉट एंटर द फील्ड बिकॉज़ दे कैन नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट सच फार्म तले सब जंग फार्म सेठी अफोर्ड करि परिबे नाही तले तेनु एटी जेमती आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रेलवे गोटे रहिला रेलवे कोन इट इज गोटे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट लार्ज इन्वेस्टमेंट दरकार एटी लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड दरकार तले से जगह रे कोन आउ के जीवनी गवर्नमेंट आज मोनोपोली ओवर रेलवे तले जेमती स्टेट गवर्नमेंट विल हैव सम सोल राइट प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग सम गुड्स तले गवर्नमेंट रो किछि जेमती एटॉमिक एनर्जी रो स्टेट रो पावर अछि गवर्नमेंट रो पावर अछि आउ के ताकू प्रोड्यूस करि परिबेनी तले इट इज हैव मोनोपोली ओवर दैट अच्छा पर्टिकुलरली आमे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रे जानिले कोन ना डिमांड कर्व इज ए परफेक्टली इलास्टिक एंड पैरेलल टू दैट इज योर x axis or horizontal axis but in case of that is monopoly since monopoly is a price maker then the demand curve slopes downward तले in a monopoly market demand curve slopes downward तले ये तळकू गति करि थाए निम्नाभिमुखी होई थाए अच्छा what happens to marginal revenue curve ना marginal revenue will be less than that of the average revenue तले demand curve ता तमरो कोन की that is your average revenue curve काहे कि हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन रे पढ़ले that is price line you can say तले average revenue curve is or average revenue is more than that of the marginal revenue under monopoly तले therefore marginal revenue curve lies below the average revenue curve एट देखो हमें एट पाइबा तले एटा कोन दिस इज योर प्राइस ए ये देखो 11 10 9 8 7 6 5 and 4 quantity 0 1 2 3 4 5 this is quantity sold तले देखो 80 tr केते हिजो 0 80 tr केते ला 10 तले mr केते हो 10 minus 0 that is 10 9 into 2 that is 18 18 minus 10 that is equal to 8 8 into 3 that is equal to 24 24 minus 18 is equal to 6 7 into 4 that is 28 28 minus 24 that is 4 6 into 5 that is 30 30 minus 28 is equal to 2 काहेकि ना हमें सक्सेसिवली टोटल TRN मार्जिनल रेवेन्यू कोन की ना मार्जिनल रेवेन्यू is equal to TRN minus 1 ताले सबसीक्वेंट हमें डिफरेंस नेले हमें मार्जिनल रेवेन्यू पाइबा ताले एई मार्जिनल रेवेन्यू कॉलम आ एवरेज रेवेन्यू कॉलम को कंपेयर कले देखो दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द average revenue at each level hela of quantity sold तले one thing एटी गोटे जिंस मु कहया को चाहूची रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आमी जानि जे दी स्पेशल रिलेशन आर गोटे अछि काहे कि ना मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होल E minus 1 by E or you can say that is average revenue is equal to marginal revenue into E by E minus 1 this portion तले एई उटा का सब बेले हमें एई पोर्शन टी E by E minus 1 और E minus 1 by E will be less than unity तले MR will be less than price हमें जेते बेले कैलकुलेशन करिवा E minus 1 by E जेते बेले less than unit marginal revenue will be less than price ताले सेही पे marginal revenue ऊपरे ये डिपेंड करछि और that is your 1 minus 1 by E is less than 1 जेते बेले होबा it will be
take the value. It is different value of elasticity of demand at different points. जेमती आम जाने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू कौन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ना दैट इज परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंट चेंज इन प्राइस. तले we can calculate the value of elasticity of demand at midpoint हो कि this point हो आम जदि point measurement जानी चे आगुरु एमईसी माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 पोर्शन ने हमें पढ़ी चे that is point measurement of elasticity of demand सेठी हमें कौन कोचे that is lower segment by upper segment. तले ए पोर्शन ने elasticity of demand is equal to 1 upper portion ने it is कौन less than 1 it is कौन greater than 1 এই জায়গায় কোন ইট ইজ ইনফিনিটিভ. আচ্ছা দেখো এইট লিখলা দি মিড পয়েন্ট অফ দি কার্ভ দি ইলাস্টিক অফ ডিমান্ড ইজ -1 দিস ইজ ওয়্যার দি কার্ভ ইজ ইউনিট ইলাস্টিক. তাহলে মিড পয়েন্ট রে কোন লোয়ার সেগমেন্ট যেতিকি অপার সেগমেন্ট সেতিকি লোয়ার সেগমেন্ট বাই অপার সেগমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 1 এই জায়গায় লোয়ার সেগমেন্ট বড় অপার সেগমেন্ট ছোট তাহলে এই পোরশন অপার পোরশন রে that is elasticity of demand is greater than 1 এই পোরশন elasticity of demand is less than 1 তাহলে আমি জানিলে এতিকি ইয়ে করি. তাহলে বর্তমান দেখিবা আমি that how is price is going to be determined. Equilibrium price and output is determined. আমি ফার্স্ট কন্ডিশন জানিছে কোন না প্রফিট ইকুইলিব্রিয়াম মিন্স কোন না we can measure it in two approaches. One is your total cost and total revenue approach and another is your marginal cost and marginal revenue approach. You just observe this figure. Then this is your total revenue curve, this is your total cost curve. Then the maximum difference between total revenue and total cost कोठी अचीव करियो ना जो जगह रे tangent drawn आमे दीटा tangent टाणिबा এই total cost curve को and total revenue curve को जो जगह रे tangent दीटा parallel हबो सेही डिस्टेंस ता होची maximum distance जोटा कि total profit will be maximum. तले এই जगह देखो AB is the maximum profit and QE is the maximum profit. तले marginal cost and marginal revenue approach कोन ना MC is equal to MR. आमे बर्तन देखिबा marginal revenue and marginal cost approach short run and long run equilibrium. In short run you observe here tale this is your average revenue curve tale which is a downward sloping curve and this is your marginal revenue curve. Marginal revenue curve lie below average revenue curve and we introduce short run average cost curve and short run marginal cost curve. Short run marginal cost curve intersect short run average cost curve at this point or passes through this point and MC is equal to MR at point E. Tale this is your equilibrium point and a perpendicular line passing through this point touching average revenue curve at point C and average cost curve at point D. Tale there is unit profit because average revenue is more than that of the average cost. Average cost is equal to Q1C, average revenue is equal to Q1C and average cost is equal to Q1D. Therefore CD is the per unit profit and total profit CD into OQ1 or CD into BD kaiki na BD is equal to OQ1 which gives this shaded area. Tale ACDB is the supernormal profit earned by a monopolist. Tale normal profit can also be earned by a monopoly firm or monopolist. Tale kette bele na jette bele that short run average cost curve and short run average cost curve will be tangent at point R. ताले এই জায়গায় কোন হলা না that is average revenue and average cost is equal to MR. देखो MC this is your MC, this is your AC. MC curve passes through the minimum point of AC curve and this establish the equilibrium at this point which determines the OM equilibrium output and OP equilibrium price. But there is no profit. It is called normal profit. Positive profit MC is equal to MR, AC is equal to AR. Therefore, it is no profit and no loss. Then minimum loss. Then when the minimum point will be passes, minimum point of the average cost curve will lie above the average revenue curve.
ताले एटा हला तमर एवरेज कॉस्ट कर्व एटा हला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व दिस लाइन इज योर MC curve passes through the minimum point of the average cost and average variable cost. Equilibrium will be determined at point E, that thereby determines equilibrium level of output OM, and this is your loss. NA is the per unit loss. Total loss is equal to PNA P1. This is one problem. Let the cost of production of monopoly, this is your cost function, and this is your price demand function, inverse demand function. ताले profit maximizing level of output केमिति हम बाहर करिया. ताले C is equal to एति की ताले MC is equal to कौन DC of DQ. ताले एई गोटी करा डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं जाओ. ताले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेले हम पाइबा केते डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ q स्क्वायर इज इक्वल टू 2q. ताले MC इज इक्वल टू 2q हैला. ताले P इज इक्वल टू एति की ताले रेवेन्यू में बाहर करिया प्राइस मल्टीप्लाइड विथ q इज इक्वल टू रेवेन्यू. ताले PQ और R इज इक्वल टू 20q माइनस q स्क्वायर. ताले MR कोन ना DTR ऑफ DQ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन. ताले 20 and 2q 20 minus 2q. ताले what is the equilibrium condition, profit maximizing condition? Now MC is equal to MR. ताले now 20 minus 2q is equal to 2q where q is equal to 5. Clear? ताले if q is equal to 5, substituting this value in the price function, or that is your demand function, here inverse demand function, we will get that is P is equal to 20 minus q is equal to this. Illustration you try to practice it. ताले long run equilibrium लगिया. Long run equilibrium, the monopolist also incur supernormal profit. ताले that is along x-axis we will measure output, along y-axis we will measure cost and revenue. Then this is your long run average cost curve, this is your long run marginal cost curve. LMC intersect LAC तार निम्न भागरु आकु छेद करिथाय. ताले वर्तमान MR curve आकु MC curve and MR curve are intersecting each other. जणे अन्य जनकु E point रे छेद करचनी. ताले E point your equilibrium point जोटी की फार्म will attain equilibrium. ताले equilibrium level of output केते हैला ना that is your OM. Price will be determined. Price केते MJ or OP. ताले MJ is your equilibrium price or OP is your equilibrium price. Per unit profit केते हैला जाति JH. MJ minus MH is equal to JH. JH होची तमरा per unit profit. ताले एति की अमाउंट पे गोटे यूनिट पे जदी एति की प्रॉफिट हैला ताले OM अमाउंट पे प्रॉफिट केते हेबो ना OM into JH is equal to PJH P1. सेमती तारा प्रॉब्लम अछि करिवो comparison. Just you can जानिला perfect competition कोन and monopoly कोन. ताले just simply compare that monopoly price of perfect competition भितरे we can distinguish the अच्छा डेड वेट लॉस कौन. डेड वेट लॉस देखो एटी हमें गोटे देखुचे ए फिगर की देखो एटा हला क्वांटिटी वी विल मेजर क्वांटिटी हियर एंड दिस इज योर डिमांड कर्व ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व. एटा हला हमर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्टिंग एमआर कर्व एट दिस पॉइंट. ताल देयरफॉर इट इज योर इक्विलिब्रियम. एटा मार्जिनल कॉस्ट कर्व. एटा हला पिले हमर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. ताले एटा हला इक्विलिब्रियम पॉइंट. ए पॉइंट रे इंटरसेक्ट कला किए इक्विलिब्रियम हैला मोनोपोली फार्म हैला. ताले वर्तमान ए जो शेडेड विभिन्न प्रकार शेडेड एरिया अछि. ताले एटा को हम कोन कहबा दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस और बायर सरप्लस बोली ए एरिया टा को हम कहबा. एटा कोन हैला ना दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट. एटा हैला कोन प्रोड्यूसर सरप्लस और यू कैन से सेलर सरप्लस लाइंग अबव द मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड बिलो दिस प्राइस लाइन. एंड एटा कोन दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट. ए जो ट्रायंगल एरिया टी रहिला ताले दिस इज कोन ना दिस इज योर डेड वेट लॉस. बुझेला ना नहीं. अच्छा तापर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कोन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैला कोन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. वन इज योर पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आगुटे हैला ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आगुटे हैला ऑन द बेसिस ऑफ यूज. ताले प्राइस केमिति ताले
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन माने कौन ना जिते बेले गोटे मोनोपोलिस्ट विभिन्न कंज्यूमर और विभिन्न बायर को विभिन्न प्रकार प्राइस डिफरेंट प्राइस चार्ज करे ताले ताको हम कहया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैला ताले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अराइजेस फ्रॉम थ्री सिचुएशंस गोटे ला पर्सनल गोटे ला जियोग्राफिकल गोटे ला ऑन द बेसिस ऑफ यूज ताले पर्सनल ता कोठी हुए ना पर्टिकुलर गोटे रिच पेशेंट जने डॉक्टर गोटे रिच पेशेंट को चार्ज कला हाई प्राइस एवं गोटे पुअर पेशेंट को चार्ज कला लेस प्राइस जियोग्राफिकल रीजन रे केमदी होची ना एटा केते बेले होची ना जेते बेले गोटे एरिया रे जियोग्राफिकल एरिया रे गोटे प्राइस चार्ज करा होची डिफरेंट प्लेसेस रे ताले जियोग्राफिक एरिया को नै करी कंसीडर करा होची जियोग्राफिकल सिचुएशन को नै करी कंसीडर करा होची ताले ताको हमें कहया कण जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन on the basis of use ताले जेमती हमें कहूचे कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी रो यूज ता कम प्राइस एवं कमर्शियल यूज ता होची अधिक प्राइस ताले एटा हला डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ताले फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रथम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रे कोड हुए ना जेते बेले मोनोपोलिस्ट विभिन्न बायर को विभिन्न प्रकार प्राइस चार्ज करे ताले जेमती लॉयर चार्ज करछनी एंड डॉक्टर चार्ज करछनी सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कोठी हो ना जेमती रेलवे गोटे प्राइस चार्ज करछि एयरलाइन गोटे प्राइस चार्ज करछि ताले एटी कोन होछि ना बायर्स माने को डिवाइड कर दिया होछि ग्रुप रे ताले गोटे ग्रुप को गोटे प्राइस आ गोटे ग्रुप को आ गोटे प्राइस एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जेमती होछि कोन ना आमे एटी मार्केट टा को डिवाइड कर दोचे विभिन्न ग्रुप रे ताले ग्रुप रे विभिन्न ग्रुप रे कले आमे मार्केट को ताले सब मार्केट ताले विभिन्न सब मार्केट रे आमे केमिति विभिन्न प्रकार प्राइस चार्ज करिबा